Hello, welcome friends. In this lecture, we'll learn multi-threading programming in Java. I know. Whenever many students will heard this term multi-threading, उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है, अरे यार क्या बोरिंग सा चैप्टर है, बहुत पकाऊ चैप्टर है. It's a very complex chapter. It's a very complex concept. But it is not like that. It is very easy and the most simplex concept in Java. Yes, I'm serious. I'm not joking. कैसे? चलो उसको बनाते हैं हम लोग easy. Okay? So let's start this session. Let's start the multi-threading programming in Java. If you recall my first lecture, we already learned the advanced features available in Java, and we have discussed 4 or 5 features, and this is one of them. Java provides multi-threading facility. Do you remember this feature? Yes, good. Now, in that session, we have seen this figure in which there are total 3 processes, process 1, process 2, process 3. Process 1 is having 1 thread, process 2 is having 2 thread, and process 3 is having total 4 threads. So by looking at this figure, I can easily conclude that thread is nothing but it's a part of process. Yes or no? Yes, good. So if someone asks you the question that what is thread, so you can simply state the answer like thread is a part of process, or you can also say that thread is a lightweight process. Why can say it's a lightweight process? Okay, चलो वो डिस्कस करते हैं. So again we'll repeat the figure. There are total 3 processes and each and every process is having some number of threads. That means it is possible to have multiple threads in a single process. Is it clear? Okay. Now the most important question, which one is better and which one is faster? So ultimately I am asking the difference between two concepts, multi-threading and multi-processing. Which one is faster? Which one is more better? In which concept? So my answer is multi-threading is much faster than multi-processing. Why? चलो यहाँ पे इस फिगर में देखो क्या है. सबसे बड़ा जो सर्कल है that is operating system, and right now there are total 3 processes running in this operating system, process 1, process 2 and process 3. ये तो ऐसी बात हुई कि चलो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी चीज़ ओपन करके रखी है. चलो मेरा नेटबीन्स यहाँ पे ओपन है, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 स्लाइड्स मेरी ओपन है. दैट मीन्स ये अभी मेरी कितनी प्रोसेस स्टार्टिंग में है? 3 प्रोसेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग? मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स at a time more than one process can run simultaneously. Same way, multi-threading means at a time more than one thread can run simultaneously. But there is one slight difference between multi-threading and multi-processing. And what was that difference? Assume if I am going to open Microsoft Word. Right now I am typing something, that means a single thread. Simultaneously I will open the help, online help from the Microsoft website, from the Microsoft Word itself. So in this condition my process remains the same. My process is only once, that is Microsoft Word, but I have divided that process in 2 threads. In the first thread I am typing something, and in the second thread I will see the online help. So this is multi-thread and multi-process. Now simple question, simple example. Assume in your college you are having different ground for different games, like you are having separate ground for football, separate ground for cricket, as well as for the another game like tennis. And in my school there is only one ground which provides the facility for all these 3 types of games.
नाउ इन बोथ द कंडीशन, मान लो अगर मुझे किसी एक गेम में से दूसरे गेम के अंदर स्विच ओवर करना है, सो कौन सी कंडीशन के अंदर सबसे फास्टर ग्राउंड चेंज कर सकोगे आप? जिसके मेरे स्कूल के अंदर, क्यों? बिकॉज इन माई स्कूल आई एम हैविंग ओनली सिंगल ग्राउंड विच कंटेन ऑल द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड फॉर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेम्स. ये तो ऐसा ही हुआ कि एक क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं खड़े हो जाओ और घूम के पूरा कॉलेज फिर से इस क्लास में आ जाओ. और दूसरी बार मैं इसको बोलता हूँ सिर्फ इस क्लास के अंदर चक्कर लगा के वापस आओ और बैठ जाओ. कौन से कंडीशन के अंदर वो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा? सेकंड कंडीशन. सो दैट इज मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेड मीन्स व्हाट? आपके पास एक कॉमन रिसोर्स है, यू आर हैविंग अ सिंगल रिसोर्स, यू आर हैविंग ओनली सिंगल मेमोरी, और उसके अंदर ही आपको सिर्फ खेलना है. While in the case of multiprocessing, you are just changing the ground, you are just changing the memory. So if I am going to switch over, or if I am going to transfer from this process to this process, from Microsoft Word to NetBeans, this condition is called context switching. But if I am going to transfer from T1 thread to T2 thread, this condition is also called the context switching. So context switching is true in both the cases, either in thread or in process. So what is the basic definition for context switching? Transfer from one position to another position, and that position may be thread or it may be process. But if I will transfer from this process to this process, obviously it required some more time than transfer from T1 to T2. So by looking at the figure itself, we can easily know that how multi-threading is faster than multi-processing. And that's why we can say that the threads are nothing but it's a lightweight process. So you can divide your single process into the number of tasks, into the number of threads, and you can easily switching between all the types of thread according to your requirement. And Java provides, this is the most powerful features of Java programming language. How? That we will see during our practical session, during our demo session. So difference is clear. What is multithreading? What is multiprocessing? Which one is better? Good. Now the next slide. Thread lifecycle. For the theory point of view, this is the most important concept, because mostly in all the examination this is the common question. They explain the thread lifecycle in detail, or the question might be like this: what are the different states of threads in its life cycle? So life cycle means what? अगर चलो मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि tell me your life cycle, so what is your answer? आप सुबह उठ के क्या करते हो, कहाँ पे जाते हो, और शाम को डिनर के बाद वापस सो जाते हो. This is your life cycle. Same way there is a life cycle for the particular thread, और उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो अभी हम देखेंगे. So first state, you have to create the new thread. When you will create the new thread, and when you start that thread, the first state of thread is a ready state. What is the meaning of ready state? Whenever the threads are in ready state, that means that thread is ready for the execution. Right now it is ready, it just wait for the resource. Whenever that thread will get the resource, it will move from ready state to running state. Is it clear? Okay. Assume into the running state, suppose to complete the execution of this thread, that thread required some external resources. For example, to complete the task of some thread, this thread required printer, and assume right now printer is not available. At that time, this running thread will go into the block state. So ready state, running state, and from running to block. Whenever your thread will get the printer, it will not directly come into the running state. First it will go to the ready, then from ready it will
into the running state, and whenever your thread will complete your execution, finally that thread will go into the dead state. So ultimately there are total main 4 states: the ready state, running state, block state and dead state. Ready means what? It's ready, it just wait for the right resources. Running means वो running mode में कब आता है? Whenever your thread will get the CPU. From the running to complete execution, sometimes it might require some external resources, and suppose if that resource is not available, then it go into the block, and if it finish execution, then from running to it will go into the dead state. So this is the thread life cycle, and out of all these phases of thread life cycle, how many phases are dependent on programmer? That means how many phases are controlled by the programmer and how many phases are controlled by the scheduler. So that we will see in this figure. So from the programmer perspective view, you can create the thread, and after creating the thread you can start the thread. Once you start the thread, remaining all the phases are controlled by the scheduler. Scheduler is totally dependent on the processor, version and your operating system. So this is the most important, most important. You cannot predict the output of multi-threading program. Why? Because इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मेरे पास एक मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम है, एंड इफ आई एम गोइंग टू एक्सिक्यूट दैट प्रोग्राम इन माई मशीन, then I will get some different output, and same program without any changes, if I am trying to execute in your machine, it might be possible you will get some different output. Why? Because all the phases of the multi-threading programmings are controlled by the scheduler only, and scheduler is totally dependent on operating system and processor speed. So remember this figure, out of all the phases, the programmer can only create the new thread, and after creating the thread, he or she can start the thread. But after starting the thread, all the control goes to the scheduler part. So this is all about thread life cycle. Now come to the practical point of view, how to create actual thread in Java. Actually there are total 2 ways for creating a thread. The first way, implementing runnable interface, and second way, extending thread class. कुछ पता चला? नहीं, चलो देखते हैं. Implements, ये कीवर्ड हम कौन से चैप्टर के अंदर यूज करते थे? Interface. Implements means what? Interface concept. And extends means what? Inheritance concept. So either you can use implement keyword, और कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हो आप? रनेबल. सो दिस इज द इनबिल्ट इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय जावा. और कौन सा क्लास आप एक्सटेंड कर सकते हो? थ्रेड क्लास. सो अगेन दिस इज द इनबिल्ट क्लास. सो अगर मुझे कस्टमाइज थ्रेड क्रिएट करना है, देन व्हाट आर द आइडियल वे? सो दिस आर द 2 वे. सो अगर मुझे लिखना है क्लास का नाम, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? हियर class, then any name like demo, extends thread. This is the way to create the thread. Or I can write class demo implements runnable. So these are the 2 ways for creating the new thread in Java. So we'll see this both the methods in detail practically. Clear? Okay, so open the NetBeans. First we'll create the new project, Java application, and lecture 12. And in this project we'll make one class, right click, new Java class, demo thread. Clear? Okay, now हमारा पर्पस क्या है? We want to create a thread in our program. So how to create a thread? So there are total 2 ways. Either you can implement runnable interface, or you can extend the thread class. We'll see each and every way, each and every method in detail, one by one. So first we'll start with the runnable interface. Okay.
now class demo and implements कौन सा इंटरफेस है, रनेबल, ओके। अज्यूम इंटरफेस का टॉपिक याद है आप लोगों को? कैन आई राइट द बॉडी ऑफ मैथड, द लॉजिक ऑफ मैथड इनसाइड द इंटरफेस? नेवर, कभी नहीं। सो वो लॉजिक हम कहाँ पे लिखते थे? whenever any class implements that interface, at that time we can write the logic. So इसका मीनिंग यही हुआ कि we are having one runnable inbuilt interface. That means there are some inbuilt method of this interface. So compulsory we have to write the logic of that method. और अभी तक हमने वो मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई है. That's why netbeans will show us an error. चलो देखते हैं, बराबर? ओके, फर्स्ट हमारा काम क्या है? आई विल इनिशियलाइज द थ्रेड क्लास. एक बार देख लो, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन इन डिटेल. पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. थ्रेड टी. नाउ आई विल टेक द कंस्ट्रक्टर एंड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आई विल क्रिएट द थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट लाइक टी इक्वल टू न्यू थ्रेड एंड डेमो थ्रेड. क्लियर? ओके. डेमो थ्रेड, इसका मीनिंग क्या है? थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है? डेमो थ्रेड. दैट मीन्स थ्रेड क्लास इज an inbuilt class and it must have the constructor with one argument. So ultimately मैंने यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिए हुए, ultimately I have given the name for this particular thread. कभी जो मैं थ्रेड क्रिएट करने वाला हो वो थ्रेड का नाम मैंने क्या दिया है? डेमो थ्रेड. बराबर? ओके. नाउ नेक्स्ट, अभी जो मैंने इतना लिखा थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड डेमो थ्रेड, इसको हम कौन सा स्टेज बोलते हैं? रेडी स्टेट. फ्रॉम द थ्रेड लाइफ साइकिल दिस इज कॉल्ड द रेडी स्टेट. बराबर? अभी एक लाइन बाकी है रेडी स्टेट में लाने के लिए, और ये हम जो लोग थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सा थ्रेड है? चाइल्ड थ्रेड. तो पेरेंट थ्रेड कहाँ गया सर? वो देखते हैं, अभी देखते जाओ, एक बार पूरा प्रोग्राम देख लो, मजा आएगी. चलो, नाउ टी डॉट स्टार्ट. सर टी डॉट क्यों लिखा और स्टार्ट कहाँ से आ गया? ओके, यहाँ पे देखो टी कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है? थ्रेड क्लास का. और टी डॉट स्टार्ट लिखा, दैट मीन्स दिस मेथड इज फ्रॉम विच क्लास? थ्रेड क्लास. इसका मतलब ये हुआ ना? ओके, गुड. सो अभी तक मैंने जो लिखा, दिस ऑल द लाइन्स आर फ्रॉम द रेडी स्टेट ऑफ द थ्रेड लाइफ साइकिल. whenever you will write or whenever you write this statement thread dot start, immediately your JVM will look for the run method. कौन सी मेथड? रन मेथड. पब्लिक void, देखो अब हमारे ऊपर जो एरर है वो एरर चली जाएगी, रन गई एरर, यहाँ पे एरर आती थी. क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द लॉजिक ऑफ रनेबल इंटरफेस मेथड. और मैंने जैसे ही रन मेथड डिफाइन की वो एरर चली गई. दैट मीन्स दिस मेथड, दिस रन मेथड इज फ्रॉम विच इंटरफेस? रनेबल इंटरफेस. So if I want to implement this interface, then compulsory I have to write the logic for the run method. This is the most important method in multi-threading program. Why I am saying most important? Because आपको थ्रेड से जो भी एक्शन परफॉर्म करवानी है, आपको थ्रेड से जो भी काम करवाना है, वो सारे काम, वो सारी एक्शन, you can write all the types of coding into this method. So this is the heart of multi-threading programming. So अभी मुझे इस प्रोग्राम के अंदर थ्रेड के पास क्या करवाना है? चलो हम एक काम करते हैं. We'll simply take one for loop which print the value of I from 5 to 0. 5,
4 3 2 1 0 ऐसा कुछ करवाना है, बराबर। चलो उसके लिए ये मैं किसके लिए लॉजिक लिख रहा हूँ रन मेथड के अंदर, थ्रेड के लिए। कौन सा थ्रेड, जो अभी मैंने क्रिएट किया है, और उस थ्रेड का नाम मैंने क्या दिया हुआ है, डेमो थ्रेड। यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। पब्लिक वॉइड रन, चलो फॉर इंटीजर I equal to 5, I greater than 0 and I minus minus। मुझे क्या करवाना है, I will simply print the value of I is plus I। क्लियर, ओके। अब एक नई चीज मुझे यहाँ पे करनी है। आफ्टर printing the each and every value of I want some kind of pause। pause means मुझे थ्रेड को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करना है। so for blocking purpose, for pausing purpose, thread class is having one more method and that method name is sleep method। so यहाँ पे हम लिखते हैं, चलो थ्रेड sleep method, thread dot sleep। और देखो स्लीप के अंदर मुझे कौन सी आर्ग्यूमेंट पास करनी होगी, मिली सेकेंड। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर स्लीप मेथड। यू हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू पास 1000, then this 1000 will consider as 1000 millisecond। that means after printing the any value for the I, my thread will pause for 1 second, 1000 millisecond। so this is the syntax for the sleep method। and यहाँ पे मैंने पूरा thread क्यों लिखा है, क्यों मैंने सिर्फ t dot sleep नहीं लिखा, because sleep method है thread class की ये method है, but this is the static method of the thread class। that's why here I have written thread dot sleep and I have not written t dot sleep। is it clear? Again I am repeating the sentence, sleep is the static method from the thread class। that's why I have written thread dot sleep, and as an argument whatever number you have given, that all the numbers are considered as a milliseconds। if I am going to pass 2000 milliseconds, then my thread will pause for 2 seconds। clear? so यहाँ पे error क्यों आ रही है, because there is one more rule that you have to remember। if you want to use sleep method, then compulsory you have to use exception handling। why? चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप की एग्ज़ाम 1 वीक चली, ज़बरदस्त, आपने ज़बरदस्त पढ़ा, पूरी रात निकाल के आप लोगों ने पढ़ा, लास्ट पेपर था, आप घर आए हो, आराम से सो गए हो, और अचानक से आपके फ्रेंड आपके घर पे आते हैं और आपको उठा देते हैं। आपकी नींद बिगड़ेगी, हाँ। गुस्सा आएगा, हाँ। सिर्फ सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर हुई तो, अगर कोई थ्रेड पर्टिकुलर टाइम्स के लिए पॉज है, ब्लॉक है, एंड ड्यूरिंग दैट ब्लॉकिंग स्टेट अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो it will generate an exception। so to handle this type of situation, there is one thumb rule that you have to remember। if you want to use sleep method, then compulsory you have to put that block of code inside the try and catch block। clear? okay, चलो। so यहाँ पे मैं simply कौन सा block कर देता हूँ, try block, and this is the end of try block, and immediately I'll put the catch block। for the sleep method there is one special exception, and that exception name is interrupted exception, that you have to remember। और यहाँ पे कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, error और do not disturb। क्लियर? ये मैसेज कब प्रिंट होगा, जब आपका थ्रेड ब्लॉक स्टेट में होगा और उस दौरान अगर कोई उसको डिस्टर्ब करता है, अदरवाइज दिस मैसेज विल नॉट प्रिंट एनीमोर।
सो दिस इज ऑल अबाउट रन मैथड. हमने कुछ नहीं किया, वी विल जस्ट यूज द फॉर लूप which move from 5 to 0 and print the value of I. And after printing each and every value, I have just given the 1 second pause between two values. Nothing, I have done nothing. Okay? Now, चलो इसके अंदर आ जाते हैं. Now we will define the main method and inside the main method the first पूरी प्रोसेस में रिपीट करता हूँ. Try catch block पूरा यहाँ से copy and I will paste it over here. Okay, but instead of I will change the variable j, and here also j and value of j. Clear? Okay. सर आपने ये प्रोसेस क्यों यहाँ पे रिपीट कर दी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ये कौन सा थ्रेड है? चाइल्ड थ्रेड. तो सर पेरेंट थ्रेड कहाँ पे गया? Whenever you are going to write public static void main in any Java program, that means you are talking about main thread. That means you are creating the main thread. So whenever you are going to write PSVM public static void main, that means you are creating the main thread. So अब तक हमने जितने भी जावा के अंदर प्रोग्राम्स किए वो सब प्रोग्राम्स के अंदर थ्रेड था और वो थ्रेड का नाम क्या था? मेन थ्रेड. So we cannot create main thread. We can create only and only child thread. Clear? So यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने थ्रेड्स है? अभी 2 थ्रेड है. एक मेन थ्रेड, दिस इज द मेन थ्रेड, एंड एक चाइल्ड थ्रेड जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है. And we cannot create the main thread like this. So main thread is by default created by the JVM. कब? Whenever you are going to write public static void main. Clear? Now one more thing. मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर के अंदर बताया था कि if you want to skip try and catch block, then you can directly write throws keyword with method signature type. So I can write public void run throws interrupted exception, but this thing is not valid with the run method signature type. This is rule. You cannot use throws keyword with run method. Got it? Good. So this is just a simple thread program. Okay, I will execute this program. Right click, compile, and let's check what will be the output. Window output. Okay, it's built successful. Right click, run. Value of j is 5, then after 1 second 4, then 3, then 2, then 1, build successful. So इसका मतलब तो ये हुआ कि इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और वो कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ? मेन थ्रेड. ये थ्रेड तो पिक्चर में आया ही नहीं. वाई? क्योंकि यहाँ पे हमने वो थ्रेड स्टार्ट किया ही नहीं है. चलो, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो. क्लियर? सो एंड द मेन मेथड मैंने क्या लिखा है? डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो. सो ऑटोमेटिकली इट विल कॉल द डेमो कंस्ट्रक्टर. यस और नो? ओके, यस. एंड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर मैंने क्या किया हुआ है? हियर आई हैव क्रिएटेड द न्यू थ्रेड, और उसका नाम क्या दिया हुआ है? डेमो थ्रेड. और वो कौन सा थ्रेड है? चाइल्ड थ्रेड. उस थ्रेड को मैंने क्या किया है? स्टार्ट. और जैसे ही स्टार्ट होगा जेवीएम कौन सी मेथड कॉल करेगा? रन. और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है? दिस वन. चलो अभी हम उसको रन करने की कोशिश करते हैं. राइट क्लिक, रन, चाइल्ड थ्रेड, जे 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 जे. सर ये कैसे हुआ? अभी भी आई की वैल्यू नहीं आई, अभी भी चाइल्ड थ्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ. क्यों? ये रन मेथड कॉल ही नहीं हो रही. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? देयर इज वन स्मॉल मिस्टेक दैट आई हैव मेड इंटेंशनली. और वो मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी, दिस. ये दिस क्यों लिखा वो देखते हैं बाद में. पहले हम एक बार प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं.
राइट क्लिक, रन. चाइल्ड थ्रेड वैल्यू ऑफ I 5, J 5, J4 I4, J3 I3, I2 J2, I1 J1. Now my both the threads are working perfectly. A same program, if I am trying to execute in your machine, it might be possible I will get the different output. That is dependent on your processor speed and operating system. So this is all about how to create a simple thread using runnable interface. सर एक क्वेश्चन तो बाकी रह गया अभी कि आपने यहाँ पे this क्यों लिखा? इसका मतलब क्या है? This will refer to the current class object. सर नहीं पता चला. Okay, one more thing. Assume I am having one more class in this program and मान लो वो क्लास का नाम है student. So instead of this, here I am going to write student S. So इसका मीनिंग क्या हुआ? आप जो अभी नया थ्रेड क्रिएट कर रहे हो वो थ्रेड का नाम क्या है? डेमो थ्रेड. और वो थ्रेड कौन से क्लास के लिए आप क्रिएट कर रहे हो? कि स्टूडेंट के लिए. अभी पता चला. बट इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? दिस. दैट मीन्स कि मैं जो थ्रेड क्रिएट करने वाला हूं डेमो थ्रेड, वो मैं इसी क्लास के लिए कर रहा हूं. और इसी टू रिप्रेजेंट दिस क्लास ओनली, हियर आई हैव टू स्पेसिफाई दिस. सो दिस विल रिफर टू द करंट क्लास. उसको JVM को बताने के लिए कि हम जो थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं अभी चाइल्ड थ्रेड, वो इसी क्लास के लिए कर रहे हैं. टू रिप्रेजेंट दैट थिंग, हियर यू हैव टू पास दिस. So if you forgot to write this, तो आपका थ्रेड क्रिएट होगा लेकिन कोई भी क्लास के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अभी हमने लिखा था ना पहले ऐसे डेमो थ्रेड. इट्स ओके, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सिंटैक्स. बट वो सिर्फ क्रिएट होगा. अगर आपको पता हो तो ऐसा मैसेज भी सिर्फ आता था. देखो एक बार, चलो राइट क्लिक, रन. आया मैसेज चाइल्ड थ्रेड, लेकिन उसकी रन मेथड कॉल नहीं होगी. क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से क्लास के लिए आपको ये थ्रेड एग्जीक्यूट करना है. सो टू रिप्रेजेंट दैट थिंग, मुझे इसी क्लास के लिए थ्रेड क्रिएट करना है. फॉर दैट हियर आई हैव स्पेसिफाई दिस कीवर्ड. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. और आप कोई भी बुक एक बार पढ़ने से ये कंसेप्ट आपको पता नहीं चलेगा. गॉट इट? गुड. सो दिस इज जस्ट द सिंपल प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग a thread using which method implements runnable. दूसरा कौन सा मेथड, दूसरी कौन सी मेथड है? अभी जस्ट इसी प्रोग्राम के अंदर मैं चेंज करा, माइनर चेंज है. एक्सटेंड्स और कौन सा क्लास है? थ्रेड क्लास. सब कहां पे चेंज होगा? सिर्फ चलो थ्रेड क्लास के अंदर ही हूं तो ये करने की कोई जरूरत है नहीं कि मैं थ्रेड क्लास के अंदर ही हूं. बराबर. आई कैन सिंपली यूज, अगर मुझे डिराइव क्लास में से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग? सुपर कीवर्ड. सो हियर आई हैव यूज्ड सुपर डेमो थ्रेड. टी डॉट स्टार्ट अब नहीं लिख सकते. क्यों? हम थ्रेड क्लास के अंदर है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट स्टार्ट, पब्लिक वर्ड रन, स्लीप, रिमेनिंग ऑल द थिंग्स आर सेम. देयर इज नो एनी चेंज. सो दिस इज, चलो राइट क्लिक, रन. Value of I. So this is how you can create the thread using extends thread. So sir हमको कौन सी मेथड फॉलो करनी है? Extends thread or implements runnable? So whenever somebody asks this question that which method is better to implement the multi-threading program, at that time आपको आंसर क्या देना होगा? That is depend on situation. क्यों मैंने ऐसा बोला? चलो देखते हैं. ओपन आवर प्रेजेंटेशन एंड इन आवर प्रेजेंटेशन, चलो these are the list of methods available in thread class. That method name is start, run, get name, set priority, get priority, sleep, isAlive and join. अगर ये सारी मेथड
को आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी है, देन एट दैट टाइम कंपल्सरी यू हैव टू यूज़ दिस वे, एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। लेकिन अगर आपको सिर्फ रन मेथड की ज़रूरत है, एट दैट टाइम you can go for the implement runnable interface. Why? Because whenever you are going to write class name extends thread, so by default all these methods are involved and it will occupy some memory. आपकी ज़रूरत सिर्फ इतनी है रन, तो वो तो इसमें वो मेथड तो रनेबल इंटरफेस के अंदर भी है, so you can make your program memory efficient. So that is totally depend on situation कि आपकी ज़रूरत कौन सी है. Based on that you have to select the correct method to implement the multi-threading program. Okay. Now what is the use of start method? हमने यहाँ पे लिखा था thread.start, t.start. When you write t.start, immediately कौन सी मेथड कॉल होगी? run method. What is the use of run method? जो भी काम, जो भी एक्शन हमको परफॉर्म करवानी है थ्रेड से, वो सारा लॉजिक हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? run method. Get name. If I have set some name of the thread, और मुझे जानना हो कि अभी मुझे कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो थ्रेड का मुझे नाम चाहिए, देन आई कैन सिंपली यूज विच मेथड? गेट नेम. अगर मुझे थ्रेड का कोई नाम रखना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन यूज सेट नेम मेथड. सिमिलरली देयर इज वन अनदर मेथड, सेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी. नाउ प्रायोरिटी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टू मेथड? Actually Java provides 3 types of priority. I can write 1 or 5 or 10. सर ये क्या है? चलो देखते हैं. 1 means what? Explicitly I have said the priority for this particular thread is minimum priority. 5 means normal priority and 10 means maximum priority. So explicitly you can also set the priority for the different threads. That is again depend on your requirement. बराबर. और प्रायोरिटी सेट करने के बाद अगर मुझे जानना हो कि मैंने कौन सी प्रायोरिटी सेट की है, एट दैट टाइम यू कैन यूज गेट प्रायोरिटी मेथड. What is the use of sleep method? We have already seen the use of sleep method to give some pause to particular running thread. We can use the sleep method. And what is the use of isAlive and join? That we will see in this session later on. So this all the methods are from the thread class. Clear? Okay. Now the next thing, what is the meaning of isAlive and join method? ये समझने के लिए हम प्रोग्राम के अंदर वापस चले जाते हैं. चलो चलो नाउ यहाँ पे मैं मेन थ्रेड का टाइम इंटरवल बढ़ा के 2000 कर देता हूँ. दैट मीन्स चाइल्ड थ्रेड को मैंने कितना पॉज दिया हुआ है? 1 सेकेंड. और मेन थ्रेड को मैंने कितना पॉज दिया हुआ है? 2 सेकेंड. चलो इस प्रोग्राम को हम रन कर दे. चलो राइट क्लिक, रन, आई बाद में जे, मतलब 2 जे के बीच 2 या 3 आई प्रिंट हो रहा है अभी, क्योंकि जे को मैंने बहुत ज़्यादा पॉज दिया हुआ है. ये मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है, पता है आपको? इसको हम कैसे मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं? चलो मान लो कि पहले कौन सा थ्रेड रन हुआ? आई, और वैल्यू प्रिंट हो गया आई इक्वल टू 5. बाद में वो चाइल्ड थ्रेड को मैंने कितने सेकंड्स के लिए पॉज किया? 1 सेकंड. ड्यूरिंग दैट 1 सेकंड योर सीपीयू विल नॉट सीट आइडियल. There is one context switching occur. Context switching means what? Switching from this thread to this thread. जहाँ पे मैंने वो 1 सेकंड का पॉज दिया, during that 1 second your CPU will execute this thread. That's why this is called multi-threading program, and this is the most powerful concept of Java programming language. Got it? Okay, चलो हम क्या डिस्कस करने वाले थे अभी? Okay. So finally कौन सा थ्रेड खत्म हुआ? J1. ओके, यहाँ पे कितने थ्रेड्स है? 2 थ्रेड. द फर्स्ट थ्रेड इज चाइल्ड थ्रेड एंड सेकंड थ्रेड इज मेन थ्रेड. चलो, इंस्टेड ऑफ 2000 assume I have given the pause of
500 millisecond. That means I have just given the pause of half of second. Right click, run. चलो कैसा आउटपुट है? लास्ट में हमारा कौन सा थ्रेड खत्म हुआ? वैल्यू ऑफ आई, दैट मीन्स चाइल्ड थ्रेड. दिस विल नॉट हैपन. वाई? दिस इज कॉल्ड zombie threading process. क्यों? Or you can say orphan. If you learn the Linux programming language, there are two words, zombie process and orphan process. What do you mean by orphan process? Orphan का मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? कि जिसके माँ बाप नहीं होते. यहाँ पे पेरेंट्स कौन है? मेन. और चाइल्ड कौन है? ये डेमो थ्रेड. सो यहाँ पे पेरेंट्स ऑलरेडी पहले ख़त्म हो गए हैं और चाइल्ड अभी भी अलाइव है. So this condition is called orphan condition. As a good programmer, this will not happen in your multi-threading program. And to avoid this type of situation, this type of situation means what? Compulsory in your multi-threading program, your main thread execution completes last after the completion of child thread execution. ऐसा compulsory होना ही चाहिए in ideal condition. And to make sure this thing, Java provides two methods. The first one is isAlive method and second one is join method. So isAlive method, as its name suggests, what is the use of isAlive method? As its name suggests, isAlive method check whether the execution of particular thread is live or it's running or not. कैसे? चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं. इस प्रोग्राम के अंदर हमने टोटल कितने चाइल्ड थ्रेड क्रिएट किए हुए? एक ही. Now if I want to create more number of threads, then how it is possible? Just create the more number of object like this. Demo d1 equal to new demo. Yes, again demo d2 equal to new demo. Simple. ये मैंने क्या किया हुआ है? In this program I have created total 3 child threads and 1 main thread. So this is how you can create multi-threading. This is how you can create multiple threads in a single program by creating the number of object. So in this program I am having total 3 child thread d1 and d2 and 1 main thread. क्लियर? ओके चलो अभी हमको इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हम निकाल देते हैं. ज़रूरत है तो चलो रखते हैं. चलो एक बार. नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस आउट एंड आई एम गोइंग टू राइट डी डॉट इज अलाइव. दैट मीन्स हियर आई हैव यूज इज अलाइव मेथड विच थ्रेड? डी थ्रेड के साथ मैंने यूज किया. दैट मीन्स isAlive मेथड की रिटर्न टाइप कौन सी है? बुलियन. अगर मेरा थ्रेड रनिंग कंडीशन में होगा देन इट विल सिंपली रिटर्न ट्रू. और इस थ्रेड का काम अगर जो खत्म हो गया होगा तो वो सिंपली रिटर्न क्या करने वाला है? फॉल्स. ओके ओके. नाउ अगेन आई एम राइटिंग system dot out dot println d1 dot isAlive and similar same for the d2 thread d2 dot isAlive. बराबर? okay. After creating the thread I am checking the status of the thread, whether it's working or not, whether it's alive or not. Alright, so at this point मेरा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ट्रू ट्रू. चलो देखते हैं. राइट क्लिक, रन. देखा यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू. दैट मीन्स ये थ्रेड भी वर्किंग है, ये थ्रेड भी लाइव है, ये थ्रेड भी अलाइव है. बराबर? ओके. नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी डॉट ज्वाइन. फिर मैं लिखता हूँ d1 डॉट ज्वाइन और फिर से मैं लिखता हूँ d2 डॉट ज्वाइन. यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? बिकॉज to use the join method
how to use interrupted exception. Okay. Now, what is the meaning of this statement, or what is the use of join method? Whenever I am going to write d dot join, that means your JVM will wait. Now listen this sentence carefully. D dot join means what? Your JVM will wait until the execution of D thread is completed. It waits. Whenever the execution of D thread is completed, it will move to the next line. तो हम next line में क्या लिखा है? D1 dot join. So जैसे ही वो next line के अंदर आएगा तो उसका मीनिंग क्या है कि उसके पहले जो हमने thread लिखा था, that thread has already been completed. और complete हो जाने के बाद ही JVM next line में आता है. D1 dot join, that means JVM will wait until the execution of D1 thread is completed, and whenever the execution of D1 thread is completed, it will come back to the D2 dot join. So at this point क्या होगा? हमारे पास तीनों थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन खत्म हो चुके हैं. So if I am trying to print same line at this point, so यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? Instead of true, I will get the false, false, false. How? Because all the threads have completed its task. चलो देखते हैं. Right click, run, true, 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 and then the join means what? Your JVM will wait for all the threads to complete, and whenever the execution of all the threads are completed, it will simply print false, false and false. और उसके बाद सब child thread का execution खत्म हो जाने के बाद finally your main thread will execute. So this is the ideal condition, and this is the use of isAlive method and join method. Clear? Generally there is one misconception regarding join, क्योंकि isAlive का meaning क्या है? As it name suggests, it will check whether the thread is alive or not. And whenever you ask any student what is the use of join method in thread, it will simply narrate, sir, join method is used to join two threads. But it's not like that. Join method is used, it waits until the execution of particular thread is completed. So we have discussed so much concept in this session. That's it from this session, and we'll come with some more interesting concept in multithreading in the next lecture very soon, and that concept name is synchronization. How to achieve synchronization, that we'll see into the next lecture. तब तक के लिए goodbye. Thank you for listening.